Hello everyone, welcome to IFAS. This is Rohit. In this video, I'm going to discuss two problems from JNU Entrance Examination 2019. Okay, so let's look at first question. Okay, so this is the first question we have. So what they have given in first question, we have given one set which is the union of three sets. Okay, what is first set? 2 pi plus minus 1 raised to n tan of some function given. Okay, in second set we have 3 sin x where x is ranging over 0 to pi by 2. Okay, in third set they have given 4 times e raised to 5x where x lies between minus infinity to 0. Okay, देखते कैसे सॉल्व करेंगे. पहले अपने को दिया क्या, सेट S इज अ यूनियन ऑफ थ्री सेट S1 S2 एंड S3. ओके, तो पहले क्या करेंगे, इंडिविजुअल सेट का लिमिट पॉइंट निकाल लेते हैं. तो S1 का लिमिट पॉइंट कितना होगा? इफ आई कंसिडर दिस एज S1, तो व्हाट विल बी द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट S1? So if I approach n tends to infinity, our S1 will approach to where? 2 pi plus minus 1 raised to n tan of minus 1 raised to n upon our n is approaching toward infinity. So infinity plus 1 will be simply infinity. Okay, 2 pi plus minus 1 raised to n. So tan of 1 by infinity means what? 0. So this is 0. Tan of 0 will be simply 0. So this is equivalent to 2 pi plus 0. So what is the limit point? The limit point for S1 we got 2 pi. अभी देखते हैं S2 का लिमिट पॉइंट कितना आता है. तो S2 पहले डिफाइन कैसे हुआ है देखते हैं. तो S2 इज डिफाइन 3 sin x, okay, and x is ranging over 0 to pi by 2. क्या आपको पता रहेगा sin x क्या रहता है? इंक्रीजिंग रहता है किस पे? ऑन इंटरवल 0 to pi by 2. ओके, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब क्या होगा? एंड आवर x इज लाइज बिटवीन 0 एंड pi by 2. फंक्शन इंक्रीज है मतलब क्या होगा? sin 0 इज लेस देन sin x लेस देन sin pi by 2. ऐसा क्यों कर सकते हैं हम? बिकॉज फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके, वी कैन अप्लाई साइन फंक्शन ऑन थ्रू आउट ऑन इंटरवल 0 to pi by 2. फिर sin 0 होता है कितना है? sin 0 होता है 0. sin x will be as it is and sin pi by 2 is nothing but 1. So now we got sin x which is sandwich between 0 and 1. So if I multiply by factor 3, because that's what they are asking, second set 3 into sin x. If I multiply throughout by 3 तो क्या होगा? 3 into 0 तो 0 होगा. Simply 3 into sin x and 3 into 1 will be 3. तो 3 sin x किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 and 3 के बीच में लाई कर रहा है. ओके, so we got range for second set. And what is the range? Okay, let me take you to the next page. ओके, तो सेकंड सेट के लिए कितना आया रेंज? तो S2 का रेंज कितना आ रहा है? ओपन इंटरवल 0 to 3. If I take limit point of this, what is the limit point of 0 3? Simply close 0 3. तो लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है सेकंड सेट के लिए? क्लोज इंटरवल 0 to 3. अभी देखते हैं थर्ड सेट के लिए लिमिट पॉइंट क्या आता है. तो देखते हैं थर्ड सेट डिफाइन कैसा है. तो हाउ आवर थर्ड सेट इज डिफाइंड? दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड 4 times e to the 5x, where what is x? X is ranging over minus infinity to, okay, so this is how our exponential function will look like. Okay, minus infinity to 0. Okay, for 0 onwards function is not defined. See, clearly our function is increasing on this interval. क्या होगा? minus infinity less than x less than 0. And function to increasing means what? If I apply exponential function on either side, I will get e raised to minus infinity e to the x e to the 0. Okay, e to the minus infinity is what? Simply 0. E to the x will be as it is and e to the 0 is 1. Okay, now we have to take fifth power. Okay, because e raised to 5x, so you simply take fifth power on either side. Simply we will have e raised to 5x will lie between 0 and 1. Now see, they have multiplied e raised to 5x by factor 4. So what will happen if I multiply this inequality by 4? I will get 0 less than 4 e to the 5x less than 4. अभी जो थर्ड सेट मिल रहा है उसका रेंज कितना आ रहा है? सो व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्ड सेट? तो S3 कितना आ रहा है? ओपन इंटरवल 0 to 4. अभी मैं इसका S3 का लिमिट पॉइंट लेता हूँ तो कितना मिलेगा? व्हाट विल बी द लिमिट पॉइंट फॉर S3? सिंपली क्लोज 0 4. लिमिट पॉइंट क्या करता है? बाउंड्री को ऐड करता है सेट के अंदर. सो दिस इज
our limit point of S3. Now see, पूरे S का लिमिट पॉइंट क्या होगा, जो भी अपने को S1 S2 और S3 का लिमिट पॉइंट मिला है, यू सिंपली टेक यूनियन ऑफ ऑल दिस. ओके, तो S1 का लिमिट पॉइंट यूनियन S2 का लिमिट पॉइंट यूनियन S3 का लिमिट पॉइंट. ओके, तो S1 का कितना आया था, सिंपली सिंगलटन सेट 2 पाई यूनियन विद व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेकंड सेट, इट वाज 0 3 union 0 4. Okay, this is nothing but singleton 2 pi. 0 3 और 0 4 का यूनियन कैसा होगा देखते हैं. लेट मी चूज, सपोज आई हैव दिस रियल लाइन. ओके, और बीच में क्या आ रहा है, ओरिजिन है. ये 0 2 3 इधर है, और ये 0 2 और 0 2 4 आई एम चूजिंग अनदर कलर. तो लेट्स से okay, so suppose this is my 0 2 4. okay, दिस इज 0 2 4. तो इन दोनों का यूनियन कितना होगा, 0 2 3 और 0 2 4 का, सिंपली 0 2 4. ओके, तो यूनियन दिस टू सेट, इफ आई कंबाइन दिस टू सेट आई विल गेट सिंपली 0 2 4. ओके, तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन में क्या दिया है. okay, so if I look at the option, correct option will be C. okay, so this is how one can approach. So option will be C. Now let's move ahead. तो देखते हैं next question. So question number second, what they have given in question number second. So this is how they have defined one set as, which is what, intersection Q intersection 0 1, means what, all the rational number between the interval 0 to 1. और क्या दिया, let f be a bijection from n to s, which one of the following is necessarily true. इनमें से कौन सा statement necessarily true होगा. If you look at the options carefully, they are asking about a limit point of this set. okay, तो 1/2 लिमिट पॉइंट है या नहीं, 1/√2 लिमिट पॉइंट है या नहीं. ओके, तो how one can deal with this kind of questions. क्या करेंगे देखो, suppose if you give me any let's say if you give me any rational number or irrational number between the interval 0 to 1, then I can produce a sequence which will converge to your number. okay, you give me a real number, I will give you a sequence, okay, which will converge to your number. okay, so how one can define this is very useful counter example. You can use it anywhere in real analysis. okay, so I'm going to write one sequence which is, by using, you can converge any real numbers to that sequence. okay, so this is how I'm defining, let's say, greatest integer function 10 raised to n beta upon 10 raised to n. okay, तो दिस इज द सीक्वेंस. ओके, तो आप मुझे कौन सा भी एक बीटा दो, वो क्या रहेगा, 0 और 1 के बीच में से. ओके, मैं क्या करूँगा, एक ऐसा सीक्वेंस प्रोड्यूस करूँगा जो क्या है, सिर्फ रैशनल, उसके एंट्रीज है सिर्फ रैशनल नंबर, बट वो कन्वर्ट करेगी इरेशनल नंबर को भी. ओके, सी हाउ वन कैन शो दैट. सपोज we know that the greatest integer function, what is the definition of greatest integer function, let me erase this. okay, what is the definition of greatest integer function. Suppose if you give me any let's say greatest integer function of x, it is what, it is strictly less than, strictly greater than x minus 1 and less than equals to what, x. okay, so if I consider in our context, what will be the sequence, so 10 raised to n beta will be what, less than 10 raised to n beta minus 1 and less than equals to 10 raised to n beta. okay, now if I divide throughout by 10 raised to n, what will happen, if I simply divide 10 raised to n throughout, 10 raised to n, let's say 10 raised to n, क्या मिलेगा. If I break the fraction on the left hand side, I will get beta minus 1 upon 10 raised to n. okay, 10 raised to n beta 10 raised to n less than equals to beta. Now see, if I approach n towards infinity, this term will vanishes. okay, क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बीटा आ रहा है, एंड ये क्या अपना रिक्वायर्ड सीक्वेंस xn, एंड राइट हैंड साइड में भी बीटा. मीन्स व्हाट,
we got one sequence which converts to beta from left hand side and beta also from right hand side. तो क्या हो रहा है, अपना जो सीक्वेंस है वो सैंडविच हो रहा है बीटा एंड बीटा के बीच में. मतलब क्या हो रहा है, बाय सैंडविच थ्योरम एक्सन हैज टू कन्वर्ज टू बीटा. ओके, मतलब ये बीटा आप कोई सा भी नंबर ले लो बिटवीन 0 and 1, whether it is rational or irrational doesn't matter, it will always converge to your desired number. ओके, आप कौन सा भी नंबर चूज कर दो. तो अगर इट डजेंट मैटर इफ यू टेक 1/2 और 1/√2, इट विल ऑलवेज कन्वर्ज टू योर डिजायर नंबर. ओके, दोनों के क्या हो गया, दोनों नंबर पॉसिबल है. 1/2 भी कन्वर्ट कर सकता है एंड 1/√2 भी. ओके, so if I look at the option D has to be correct. Okay, I hope you understand both the problem that we have done today, and thank you for watching our video. If you like this video, do subscribe and share with all your friends. Thank you for watching.